why I'm asking about okay. the whole flying fantasy. और हमने ये पॉप कल्चर में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा है, मतलब इट गोज़ वे बियॉन्ड कॉमिक्स में आप रेफरेंसेस ले लें कहीं पे भी. फ्लाइंग हैज़ ऑलवेज बिन समथिंग जो कि ह्यूमन बींग्स को इंट्रीग करती है. एंड बिकॉज वी कीप लुकिंग अप द स्काई, लाइक आई वुड लाइक टू कोट नील डिग्रास टाइसन here, who always says, hey, look up. So we have always been looking up, and we realized by looking up that there were some anomalies that we could not explain, some sightings that we could not explain. And अब उनके साथ बहुत सारी fancy terms, मतलब हम जब when we were growing up तो हम UFOs का नाम सुनते थे, unidentified flying objects, but then अब जो ये evolve कर गया because there are so many kinds कि they have made a parent term जो UAP जिसको बोलते हैं. And I would like you to expand on that, but generally like to summarize, like history में, culture में हम, ये कोई recent बात नहीं है. This has been going on for, you know, civilizations and pre-civilizations before human beings have ever been able to. Interpretations का फर्क. देखो मैं very briefly, पुराने वक्तों में जब ये मज़ाहिर सामने आते थे, तो हम चूँकि faith से हैं and we have a very deep connection with the faith as well, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है. लेट मी टेल यू, कुरान हकीम में एक हिकमतों से भरा हुआ एक भरी हुई एक किताब है, एक खजाना है जो कि अनगिनत. आप जितना उसके अंदर डीप डाइव करेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम दैट. ठीक है, ऑफ कोर्स इखलाकियात उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो रहेगा. लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कमिंग टू योर पॉइंट, आई मीन इफ वी टेक अ डायरेक्ट डाइव इनटू द सब्जेक्ट नाउ. अच्छा, मजे की बात ये बताऊँ, इट्स अ रैबिट होल, very difficult, very intricate, very complicated subject, but it connects a whole lot of different things. मैं तुम्हें एक जल्दी से एक उसकी एक लेवल्स बता देता हूँ. It's at the physical level, then it's at a anti-matter or physical, anti-physical level. Then there is a psychological aspect to that. Then there is a physiological, which is nuts and bolts. Then there is a psychic thing attached to it, right? It pertains to the interpretation or the kind of figures that our consciousness makes out, right? फिर उसके बाद एक कल्चरल आस्पेक्ट भी है इसका, जिसमें हम देखते हैं कि ये इसको कैसे इफेक्ट करता है, कल्चर को कैसे इफेक्ट करता है ये फिनोमेना. कहीं पे ये टैबू है, कहीं पे स्टिग्मास हैं अटैच्ड टू इट. एंड दिस इज अ वेरी रीसेंट डिस्कशन, यू नो इट, कि अमेरिका में देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन विद द स्टिग्मा एंड द टैबू अटैच्ड टू इट. अच्छा, उसके बाद मैं इसको मजीद भी कहूँगा कि it also pertains somehow to the religious realm as well. I mean, you know, the faith and, you know, some work is being done on this. Namely, there is a scholar by the name of Diana Pasulka who has written a couple of books on that, and we can quote about that later in the series of the programs that we'll do later on, inshallah. But having said that, yes. But what are UAPs? UAPs, okay, traditionally and historically known as UFOs, unidentified flying objects. Okay. Currently, मैं उस पे आ जाता हूँ कि currently इनको for a better understanding of the term, for a better understanding or an effort or making an effort of the phenomenon, we have termed it as unidentified aerial phenomenon, thereby terming it as UAPs. All right. Or let me tell you from the word go, this is not an American phenomenon. This is not focused to just the United States of America. People really tell me, people have often
discuss it with me. They point it out. I get a lot of emails on that. I got a lot of messages on that. Why is it that this phenomena just happens to be visible in the United States? That's not real. That's not true. It is happening worldwide over. Whatever it is, leaving, and I'm again stressing on that, leaving our religious explanation. Of course, उस पे भी मैं आऊँगा बाद में, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि the techno signatures, they tell us that these things are real.